So welcome everyone to another great interview with Mr. Ankush Panchal from Karnal. And we are here for Wall of Appreciation interview that is being conducted by SubMastery team. Our purpose of conducting this interview is to understand what difference we are making in our learners' life and how their professional careers are going ahead. SubMastery is a company that works for quality professionals. We conduct trainings for manufacturing, engineering, and automotive engineers. And I welcome you, Ankush, in this interview. Yes. Will you please introduce yourself, Ankush? Ma'am, my name is Ankush Panchal and I belong to Karnal district, Haryana. So I did my engineering in 2015. So, and 2015 to 17, I was free. So I didn't get the job. So I don't know how to start a career. So in 2017, one of my friends recommended one job in Gujarat. So I start my journey as a GAT in Gujarat. So I worked there around 1 year. Then I left from there and I come to Gujarat. No, sorry, Gurgaon. So I work around 4.5, around 4 years, 4 to 4.5 years. I work there in Gurgaon area in different companies. So in January, I changed my new job from NPD engineer to assistant manager. So okay, this January, last month. Yeah, this month I have joined. Okay, great. Yes. Okay. So yes, I welcome you again. And I just want to know how you came to know about the SubMastery community and SubMastery and the courses that we are offering. Okay, ma'am. Ma'am, actually in 2000, I think 2019, I was as my room. So I was scrolling Facebook. So one post about IATF comes in my news feed. So I was searching for IATF course on in different Google platform. So on Facebook, I comes to a news feed about SubMastery. So at that time, sir conducted free session for IATF. So I watched free courses. So when I watched free courses, so I decided to purchase internal auditor course for IATF. So I was second best student of SubMastery at that time. So from 2019 to 2023, I'm regularly following SubMastery courses. So whatever the means classes they are conducting, I practically apply those concepts in my shop floor area and enhance my skill. So it helped me a lot. Around 40 interview I gave, more than 40 in 5.5 years. Yes, 40, 40, ma'am. 40 interview I gave. Yeah. I write down on my copy also, so that I can improve. Yes. Right. So what improvement you found in yourself after starting the journey with SubMastery? What changes in your work on work front or related to your confidence level? What changes you found in you? When I start my career, so everyone used to talk about PPAP, APQP, FMEA, SPC. So I have eager to learn. So what are the courses? What is the physical meaning? What is means? What are the function in automotive industry? So no one is going to teach me. Everyone is just talking about that you must know PPAP, APQP, FMEA, but no one is going to tell me. So I used to search on Google, what are the courses, what is the function, and what is use. So when I start learning from SubMastery, then I come to know, oh, this function, this document work like this in our industry. So I practically apply on shop floor and industrial area, our practical life. So I start learning one by one each and every course,
I gave interview. If I find some gap in my knowledge, then I used to watch recorded video, and I used to improve. Right, ma'am. So that's Right. how I improve myself. Yes. So you're a good learner, I think. Yeah, right, ma'am. Right. Very I good. Very good. repeatedly watch all videos. Okay. 1 time, 2 time, 20 time, 30 time, Okay. unless I clear my doubt. I watch again and again and again. Right. Right. And related to your doubts, have you ever contacted SubMastery related to some Many time, doubts? many time. And you got the Whatever, response reply from them? right, ma'am. Whatever the doubt I got, whether it is small or whether it is a big, I used to post them on sir personal message, and Hmm. whenever the sir sir got time, he used to reply me. So Yes. I write down on my copy. Okay. Right, ma'am. Great, great, great. So your confidence level has increased, your way of working has increased, you are implementing the knowledge learned in your Yeah, right, ma'am. professional career. Right, ma'am. Yes. Ma'am, one incident I want to tell in Hindi. So 2020 की बात है मैम, 2020 है, हाँ, सितंबर और अक्टूबर 2020। तो मैंने एक ना इंटरव्यू दिया था फरीदाबाद में। तो वो एक्चुअली इंटरव्यू था क्यूएमएस का। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मैम ने इंटरव्यू लिया, वहाँ पे कोई एमआर थी मैम, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरे से। तो मेरा इंटरव्यू माय इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। सो इम्प्रेस होगी वो मेरे से इंटरव्यू के बाद। तो उनके मुंह से ये वर्ड था कि आप तो मेरे पेट पे लात मारोगे। मतलब मेरा इंटरव्यू के बाद उनकी वर्डिंग थी। तो मैंने उनको बोला कि मैम आप मेरे को नहीं, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको ना फ्रेश शॉप का वो बना दूंगी, लीडर, टीम लीडर। तो मैंने बोला नहीं मैम, आप मेरे को ना बेसिक असिस्टेंट रख लो, लेकिन क्यूएमएस में रख लो। उस टाइम मेरे को क्यूएमएस का मतलब जब सब मास्टरी से सीखा मैंने, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था मेरा क्यूएमएस डिपार्टमेंट में कि यार क्यूएमएस का इंटरव्यू देना है, एमआर बनना है कंपनी में। तो मैंने इंटरव्यू दिया था एक। तो मैंने उनको बोला कि मैम असिस्टेंट भी रख लोगे ना क्यूएमएस में, मैं वो भी बन जाऊंगा, लेकिन टीम लीडर नहीं। तो उन्होंने मेरे को रखा ही नहीं। तो ये बट लेवल का कॉन्फिडेंस था। यस, तो किसी हाई लेवल वाले इंसान से ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलना कि आप मेरे पेट पे लात मारोगे, मतलब उनको हाँ, पता चल गया कि उनकी, आपके नॉलेज की लेवल क्या है। हाँ, उनका इंटरव्यू उन्होंने जब मेरी मतलब मैं जिस टाइप से वर्डिंग यूज कर रहा था क्यूएमएस को लेके, तो उनको अच्छा लगा था। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैं ये नहीं कि मतलब एकदम से नहीं यार मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो वो किया यस। धीरे धीरे। अभी भी लर्नर ही है मैम, अभी भी ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। लर्नर ही बने ग्रेट। रहेंगे तभी सीखेंगे। ट्रू। अच्छा, और एक right. चीज मुझे पूछनी थी आपको कि आपने अभी यू जस्ट सेड कि यू जॉइन न्यू जॉब इन जनवरी, सो टेल हाँ अस अबाउट मैम। दैट एक्सपीरियंस। मैम इंटरव्यू मैम, I gave many interview. So this was a very light interview, I will say. Very light interview. So I gave almost 100% answer. So ओके। I think my selection is based on AIGVD FME new one. So when I tell about I knew about AIGVD FME, so I gave all the answer. So he asked 2 or 3 questions only. So I select based on only 2 or 3 questions. And you got new position, right? I mean, Right, ma'am. higher position in this Yeah, company. yeah, right, ma'am. Right, right. So, you want to give how much percentage of credit to SubMastery if I 100, ask? 100%, ma'am. No, 100% 100%. taking 100% credit to SubMastery is not, will not be fair on your part, because you are doing the hard work. You're like you're saying that you keep on preparing, and you after interviews you think about it, where you less, and how you Yes, can ma'am. improve all this thing. So Yes, ma'am. 100% तो SubMastery को credit लेना नहीं बनता है, Ma'am, but 99% is yours, 1% is mine. But yes, Arun ma'am, sir, maximum impact is from SubMastery. yes, yes, right. Yes, Thank ma'am. you. और रेटिंग कितना देना चाहेंगे कोर्सेज को, 10 में से अगर मैं मैं पूछूं तो? SubMastery का और I think 99% means course curriculum. So I will give 5
4.9 out of 5. Out of 5. Okay. Yeah, ma'am. Okay. And for our trainers? Trainer is 100%, ma'am. Arun sir is best. Arun sir. Sir, if he come online and he chat with me, then my happiness increased to 100%. Ma'am. Yes, ma'am. गुरुजी जो बोलते him. हैं. Yes, ma'am. I shared with him that I'm very happy, sir, because of you. I'm at this position. Right. एक चीज और पूछनी थी, ये जो ऑनलाइन से ट्रेनिंग्स लेते हैं हम, स्पेशली जब टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं तो ट्रेनिंग थोड़ी बोरिंग हो जाती है. तो आपका ये इससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है? ऑनलाइन अगर आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कुछ, तो बोरिंग लगता है, मजेदार लगता है, एंजॉय करते हैं, कैसा है? मैम एक्चुअली क्या है, मेरे केस में मुझे बोरिंग लगता है. मतलब ऑनलाइन मेरा मानना है कि ऑनलाइन आप कभी कुछ सीख नहीं सकते. आप फिजिकली ज्यादा अच्छा सीख सकते हो. बट अब जैसे आप उत्तराखंड में बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो उस केस में कुछ कंडीशन होते हैं कि हाँ आपको सीखना पड़ेगा उस कंडीशन में, आप वहां नहीं जा सकते फिजिकली. तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अटेंड किए, लेकिन मैं कभी लाइव नहीं देखता उन कोर्सेज को. मैं उनको रिकॉर्डेड के बाद देखता हूँ. कभी 15 मिनट देख लिया, कभी 20 मिनट देख लिया, तो ऐसे एंजॉयमेंट बना रहता है. और जब वो 15-20 मिनट करके 2 घंटे खत्म हो जाते हैं, फिर मैं एक बारी में कंप्लीट करता हूँ उसको. फिर वो कम टाइम लेता है कंप्लीट करने में. मैं इस तरीके से कवर करता हूँ. गुड, अगर एक बार ग्रेट. में 2-2.5 घंटे बैठेंगे तो वो कवर नहीं हो पाता. मैं ऑनलाइन फिर बोरिंग हो जाता है बैठना. 15-20 मिनट तो मजा आता है, लेकिन उसके बाद बैठ नहीं पाऊँ. और अरुण सर मेरे ख्याल से चीजें ऐसी बताते हैं टेक्निकल कंसेप्ट्स के साथ, थिंग्स रिलेटेड टू लाइफ, और ये सारी स्टोरी फॉर्म में, तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा अटेंशन रखने के लिए. उनका एक्सपीरियंस मैम बहुत ज्यादा हो गया. 18-20 साल हो गए हमको इंडस्ट्री में. तो उनका जो प्रैक्टिकली जो उन्होंने देखा है या फेस किया है, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं भी सीखता हूँ. और जब अप्लाई करता हूँ तो मतलब इंडस्ट्री में जिनके साथ मैंने काम किया है, वो करते हैं कि अरे तेरे को कैसे पता यार. वो मानते नहीं है इस चीज को, जबकि मैंने तो सीखा, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई है ही है. मेरे को तो पता है हाँ एक्चुअल में ऐसे ही होगा, लेकिन वो चीज मानते नहीं है. मत मानो, मेरा क्या जाएगा. सही बात है सर. गुड, ग्रेट. सपोर्ट के बारे में आपने बता दिया कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप बेझिझक पिंग करते हैं सर को, और सर का रिप्लाई आता ही है. बिल्कुल मैम. यस. लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि लर्नर्स के लिए जो सबमास्टरी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, या अपने लिए कुछ नई टेक्निक्स, नई चीजें सीखने का सोच रहे हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैसेज तो ये है कि ग्रो करते रहो, लर्न करते रहो. लर्निंग से ही आगे बढ़ा जाता है. स्किल को डेवलप करते रहो. और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा इतने कम अमाउंट में. बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट में इतनी सारी चीजें मिलती है. मैम मैंने 4,000 पे किए थे, बस 4,000. 2019 की बात बता रहा हूँ मैं. और उसमें सर ने IATF भी सिखा दिया, SPC भी सिखा दिया, MSc भी सिखा दिया. तो मतलब मेरा जो वो ऐप था ना, उसमें जो रिकॉर्डेड थी वो, मतलब मैंने देखा एक दिन शॉक हो गया. मैं इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने सब देख लिया. वो SPC MSc PWF सब था उसके अंदर 4,000 में ही. बट मैं तो IATF के लिए पे किया था. तो मेरे लिए तो मतलब इतने छोटे से अमाउंट में आपको इतनी सारी चीज मिल रही है, तो लर्न करो. और क्वालिटी चीज. बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100% वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैम. 100%. यस, 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 यस. ओके. जो आप एक्चुअल में देखते हो इंडस्ट्री में, वो. राइट. हाँ, ये फर्क पड़ता है. सिर्फ कोई कमरे में बैठ के ट्रेनिंग ले रहा है, सालों का एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रेनिंग का है, और किसी का फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क है मैम. प्रैक्टिकली आप चीजों को अप्लाई करते हो, देखते हो, वो चीज अलग है. राइट, राइट, राइट. वेरी गुड, वेरी ट्रू. सो थैंक यू सो मच अंकुश फॉर योर टाइम, और ऑल द बेस्ट आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए, और ऐसे ही जिंदगी भर लर्नर बने रहिए. बिल्कुल मैम. मेरा भी आज का आपसे मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ आज शायद, क्योंकि थैंक यू. ये लर्न करने की जो क्वेस्ट होती है, इंसान की चाहत होती है कुछ सीखने की, वही शायद इंसान को आगे बढ़ाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ऑल द बेस्ट फॉर यू. वेलकम.